Okay, bacho. So let's start the class. So we were talking about the modes in the last class, and you are going to start it again. बच्चों as you know that कि moles का जो formula हम last class में किया था वो आप लोगों को आता है, मतलब आप लोग शायद 9 क्लास से या 10 क्लास से उसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे. Now we are moving towards something the second formula like about gases, and you also know this as well. वो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेवल्स में ना. आपने देखा होगा कि आपके पास ओ लेवल्स का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके लास्ट में आपके पास लिखा हुआ होता है 1 मोल ऑफ एनी गैस. क्या लिखा होता है? 1 mole of any gas at room temperature and pressure having 24 decimeter cube of volume. ये बात लिखी हुई होती है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है if you have 1 mole of any gas it will always have 24 decimeter cube volume. For example, if you have 1 mole carbon dioxide it will have 24 decimeter cube volume. If you have 1 mole hydrogen gas it will have 24 decimeter cube volume. So you can even see this कि यार कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस उसका जो एमआर होता है वो 44 होता है और जो हाइड्रोजन गैस है उसका एमआर 2 है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एमआर ओवर हियर. तो डेफिनेटली एमआर का डिफरेंस है तो डिफ्यूजन में भी डिफरेंस होना चाहिए और डिफ्यूजन में डिफरेंस है तो फिर हर चीज में डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, होगा, सब में होगा, लेकिन the thing which is going to be same is that volume. You need to keep remember कि गैस भारी हो भाई या हल्की हो it will have the exact volume which is known as 24 decimeter cube volume. Or if you want to take it in centimeter cube, so definitely you need to multiply it with 1000, so it will be even. You can understand it as 24,000 volume in centimeter cube. Right now the thing is this कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पेपर में ये किस तरह आ सकता है. ये बहुत बहुत ही कोई कीमती फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है बच्चों. क्या है? if you want to find out the moles of any gas, remember it is only for gases, right? So if the volume is given to you, अगर वॉल्यूम डेसिमीटर क्यूब में गिवन हो बच्चों, so you know that you can divide it by 24, or if the volume is given in centimeter cube, so you can divide it by 24,000. In this way you can find out the moles of gases, right बच्चों? Is Yes, it right sir. or not? Yes. So let's talk about some exercise or some skill test. So can we check or we can check ourselves कि हम ये solve कर भी सकते हैं या नहीं. For example, if I have a question that we have 800 centimeter cube of hydrogen chloride gas and examiner asked me to calculate the number of moles, right? Definitely वो इस तरह नहीं पूछेगा moles, उसका एक पूरा proper question होगा. उस proper questions के लिए हमें step by step जाना पड़ेगा, हम directly नहीं छलांग लगा सकते ना. तो अभी हमारा जो है फर्स्ट हमारा ये अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं, अभी हम सेकंड स्टेप पे नहीं आए हैं, अभी हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे, वन बाय वन हम वो मुश्किल वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे. बट राइट नाउ वी आर ऑन स्टेप नंबर 1, so we are learning how can we use the simple formula. Right now I gave you 800 centimeter cube of volume of gas, and you know that whenever the volume of gas is given to us in centimeter cube we can find out the number of moles, right? And the number of moles is what? Volume अगर centimeter cube में given हो तो बच्चों इसको 24,000 से डिवाइड करा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे? moles. Remember again what I am saying we can only use this in gaseous volumes, right? आगे जाके परेशान ना हो जाइएगा, अभी बता रहा हूँ ये gaseous volumes के लिए है. So if you divide 800 by 24,000, so it will give you what? 0.033 moles. Is that clear बच्चों? Yes, sir. कर सकते हैं Yes, आप sir. लोग? Now I am giving you some practice questions, so I think you all guys can do this. Very quick response I want from your side. So let's talk about some exercise questions with this formula, right? For example, if I have 240 centimeter cube of carbon dioxide, I want moles of this. For example, if we have 2 decimeter cube of oxygen gas, I want moles of this. Volume, for example, we have 3.5 decimeter cube of ammonia gas, I want moles of this. And for example, if we have 180 centimeter cube of
sulfur trioxide. So what are the number of moles? Just do it quick. Just take a snap of that and send me on my WhatsApp so I can check, are you getting the point or not? Yes. तो शिफा ये आप पहले से कर चुकी नहीं या अभी किए आपने? Sir, I did it like 5 minutes ago. Okay. Okay, बच्चों. So this is the part of exercise number 1, and I think you all can do this. And we know that we just need to divide it by 24,000. We just need to divide it by 24. We just need to divide it by 24. We just need to divide it by 24,000. Is that right, बच्चों, or not? Yes, Rayan, Ahil, is that right, बच्चों? Yes, sir. Okay, so let's proceed towards the next. Yes, Abdul Samad, you did it absolutely correct. Perfect. ठीक है बच्चों. Okay, so one more thing, we can do this the vice versa of this. For example, if I gave you moles, and I ask you the volume to find out, so you can even find out the volume as well. You know that if I want volumes, you can send 24,000 over here to multiply, or even you can send 24 over here to multiply, and then you can find out the volume. So this formula can be derived for the volume as well. If examiner asks you to find out the volume of gases in decimeter cube, so it's simple as that, you need to multiply moles with 24. Or if examiner asks volume in centimeter cube, so bachcho, you just need to multiply moles with 24,000. That's all and nothing else. So keep it in your mind. For example, if you have 5 moles of carbon dioxide, simple is that, अगर आपको decimeter cube में मालूम करना है, तो 5 into 24, it will give you 120 decimeter cube. Or if you want to find out in centimeter cube, bachcho, so simple is that, just multiply by 24,000 with 5, it will give you 120 plus 305, 1,20,000. ठीक है बच्चों, this is like this, but it is in centimeter cube and one is in decimeter cube. Is that right, bachcho? Right, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Let's talk about something like moles. And moles are something very important for paper 3 and paper 2 as well, and sometimes for paper 1 as well. This is like moles. ये आपके पास moles are, right? These are actually moles, and we know that we have few things over here, like for example, this is mass, and for example, this is volume, right, bachcho? So this is mass and this is volume of gases, right? So you guys know now what we need to do. You need to do what? For example, if the mass is given to you, so you can convert this into moles. If the mass is given to you, you can convert it into moles by which? Now formula, you know that moles can be found out by mass over mR. We know this, right? And for example, if the moles is given to you, so you can even find it out, the mass by multiplying mR. So you can find it out, mass is equals to moles into mR, right? The only one out of these two is given to you, so you can solve for the second one, right? Why we are doing this? Because we know that mR is constant over here. It is constant. We can find it out by periodic table, right? Then
if you focus over here, for example, if the volume is given to you, you can find out moles by dividing volume 24 से divide करा दें या 24,000 से divide करा दें, you can find out the moles. और for example, अगर आपको moles दे दिए जाएं और मैं आपसे पूछूं बताइए volume, so you can do this even you can find out volume by multiply moles with 24. Again, there is one more thing which is constant over here. You can see over here the constant thing is 24. ऊपर देखें डिवाइड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम कंडीशन है, कांस्टेंट चेंज हो गया खाली ना. यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर 24 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. सो अगेन if out of 2 you will have one thing, so you can find out moles or even volume. तो बच्चों यही बस चीजें सीखनी है हमें, राइट? यही चीजें सीखनी होती हैं हमें इसमें. अगर आप ये सीख लेंगे so you will be very good in moles. अगर आपको यही नहीं आता ना तो आप फंस जाएंगे. तो हमें फंसना नहीं है, हमें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, हर तरह के पार्ट से इधर से उधर जाना चाहिए. अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने आपको सिंगल स्टेज वाला कराया ना, अभी आप सिंगल स्टेज पर गुजरे हैं. अभी तक मैंने आपको एक एक्सरसाइज इसकी कराई, एक एक्सरसाइज मैंने आपको इसकी कराई, एक एक्सरसाइज मैंने आपको इसकी कराई, और क्योंकि ये बहुत आसान था तो मैंने इसकी एक्सरसाइज कराई नहीं. बट यू कैन डू दिस ना, मेरे पास है, मैं आपको होमवर्क के लिए भेज दूंगा तो आप कर लेंगे, ठीक है ना. बट द थिंग इज दिस, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मास एंड वॉल्यूम. अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको मास दे दूं और आप वॉल्यूम निकालें गैस का, so there is no formula for this, but the thing is you can do it by going like this. You can see this कि अगर ये मैं दे दूं आपको मास, you can go it from mass to volume. जा सकते हैं ना बच्चों, है ना? सेम एज इट इज अगर मैं आपको वॉल्यूम दे दूं तो वॉल्यूम से आप मास में भी जा सकते हैं. तो दिस इज द कनेक्शन, मींस आपके पास जो मोल्स है ना बच्चों, दिस इज द वेरी वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स. एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए बेहतरीन चीज आपके पास क्या है बच्चों, मोल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज नंबर 5. एंड व्हाट इज दिस एक्सरसाइज सेइंग? दिस इज द टाइप ऑफ 2. दिस इज टाइप 2 क्वेश्चंस जिसमें आप दो तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है. सो एक्सरसाइज 5 कराने लगा हूं आप लोगों को, जहां आप पहली स्टेज से निकलकर दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि अब आप एक फॉर्मूले की जगह दो फॉर्मूलाए यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल एग्जामिनर गेव यू हैव 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एग्जामिनर ने आपको कहा यू हैव 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. You have mass in grams and the examiner asks for the volume in centimeter cube. So that's not a big deal for you guys, because you know that if the mass is given to you, you can find out the number of moles. We know that moles can be found out by mass dividing by mr. So right now mass is 2 gram and the mr of carbon dioxide is 44. We know that carbon is 12 plus oxygen is 16 into 2, so it will give you 44. So we know that एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 16, 36, right? So what will be the answer? Let me check, let me calculate. It is 2 divided by 44, right? So it is 0.4545, 0.04545. These are actually number of moles. Moles are there. Now you can convert this into volume as well. If you want to find out volume in centimeter cube, you just need to do what? Moles into 24,000, right? So right now we have moles 0.04545. We multiply it with 24,000. We will get what? We will get the volume in centimeter cube, and it is 1090.9 centimeter cube. Right, बच्चों? Is that clear or not? 1 mark. Yes, it's and a clear. second mark. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes. So let's talk about some examples. Let me check some examples if I have. Yes, in this group, should I have or not? Let me check. Just give me a minute. Yes, yes.
ओके, मेरे पास अभी फिलहाल इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं खुद बना सकता हूँ. So let's talk about some three examples. Example number one, there's a skill test for you. Skill test means I am checking that you can do this thing or not. So if I have 6 gram hydrogen gas, so can you find out the volume in centimeter cube or in decimeter cube? Decimeter cube में निकाल लें आप. ठीक है. For example, if you have 0.65 gram nitrogen dioxide gas. So what will be the volume of this gas in decimeter cube, right? And for example, so decimeter cube में कर लें ताकि आपको different आए करना. Then if we have 65.6 gram ammonia gas, find out the volume in decimeter cube. Just do it quick and send the picture so I can check you are doing it right or not. अच्छा जी, अब्दुल समद डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया. समझ सॉल्व नहीं किया. सॉल्व तो करो, अपने पास पता चलना चाहिए ना कैसा किया वो. ठीक है, फिलहाल आपको आ गया बहुत टाइप समझ में, तो आप उसको सर डायरेक्ट सवाल कर दो. सॉल्व बट किया, वर्किंग सर मुझे वर्किंग की. वर्किंग करनी है आपने. वर्किंग करोगे ना तो देखो समझ में आएगी चीज. अभी डायरेक्ट डायरेक्ट कर लोगे क्योंकि अभी समझ में आ रहा है ना, अभी चीज समझ में आ रही है, अभी हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे. लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. और प्रॉब्लम बाद में क्या क्रिएट होगी, जब हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाएंगी ना, तब मसला आएगा. अभी तो हमें समझ में आ रहा है ना, आप ऑलरेडी इसको पढ़ भी चुके हो. शायद आपके टीचर ने आपको इस तरह ना पढ़ाया हो स्टेप बाय स्टेप, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही मोल्स सिखाता हूँ ताकि बच्चों को मोल्स इजी लगे ना. तो अभी आप इसको कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाद में, ताकि आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये स्टेप किया था, हमने ये स्टेप किया था. बाकी एज यू विश, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन करते रहोगे ना तो देखो चीजें याद नहीं होंगी. थोड़ा सा पेन चलेगा ना, थोड़ा सा दिमाग चलेगा, वो चीजें दिल में बैठना शुरू हो जाएंगी, दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी, फिर मजा आएगा आपको.
ये देखें सिर्फ 2 स्टेप, जैसे आपने एक स्टेप किया है, यहाँ पर शिफा ने 2 स्टेप किए, बट इट लुक्स मोर गुड ना। और ये 72 आंसर आ रहा है, दूसरे का 33, 36 और ये 92.6। ठीक है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, यू आर डूइंग वेल। चलें नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके आगे चलने के लिए जस्ट लेट मी चेक यहाँ हमारे साथ कौन कौन है। Okay, bacho. So we can do reverse of this as well. And if you talk about reverse of this, so it is exercise number 6. If you talk about a reverse of this, ना तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? It will be exercise number 6. और exercise number 6 में क्या है? If I gave you volume and I asked for the mass, right? I gave you volume, like for example, हमने आपको दिया 650 centimeter cube of sulfur dioxide gas, and I asked for mass. I asked for the mass of sulfur dioxide gas. So it is again same. You need to go through the moles, and we know that if the volume in centimeter cube is given to you, you can directly divide it by 24,000. You will get the number of moles, right? So right now we have volume which is 650. So 650 को हम divide कराएंगे 24,000 से, we will get 0.0271, right? This is the answer of moles. Right now we can find out the mass as well. If you want to find out the mass of this, so this moles into mr, right? And what is the mr of sulfur dioxide? Sulfur is 32 plus oxygen is 16 into 2, so it will give you 64, right? So we need to multiply moles with 64. It will give us what? The mass of the substance. So 64, and it will give us what? 1.73 grams, right bacho? Yes, sir. We can go even backward, right? So let's talk about some 3 examples, so you can do this and you get this betterly, right? So बच्चों हमारे पास 3 examples. चलें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड हो, या 0.6 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, या 1.1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास C2H4 यानी इथीन गैस हो। सो लेट्स चेक कि आप लोग इसका मास निकाल सकते हैं या नहीं। जस्ट डू इट क्विक बच्चों।
यस, तो अब्दुल समद, आपने 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 पहला वाला बिल्कुल सही किया है, दूसरा वाला बिल्कुल सही किया है, तीसरा वाला भी आपने बिल्कुल सही किया। जबरदस्त, वेरी गुड। चलें, और किसी को भेजना है मुझे तो मुझे भेज सकता है ताकि मैं चेक कर लूँ। शिफा, सैफ और आहिल, रयान, जो भी भेजना चाहे भेज सकता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर यू कि आपने मस्ट भेजना ही भेजना है। आप भेजेंगे तो मैं चेक कर दूंगा, आप नहीं भेजेंगे तो इट्स ओके, नो इशू। अगर आपको ये है बिलीव दैट यू डिड राइट, दैट्स वेरी गुड, आप उसको समझ सकते हैं, रख सकते हैं। चलें, इसका एक थर्ड स्टेप करते हैं, एक थर्ड डिफिकल्ट वन करते हैं, ठीक है ना, जो कि पेपर में मोस्टली आता है और जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। थर्ड स्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है ना। कैम्ब्रिज में मतलब 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1, ठीक है ना, वो आप लोग क्रॉस कर चुके हो, आप इससे ऊपर की बात कर रहे हो। फिर लेवल 2, आप वो भी क्रॉस कर चुके हो, अब आप लेवल 2 से ऊपर जाना चाह रहे हो। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेवल 3। बस यही 3 लेवल कैम्ब्रिज में भी है और यही 3 लेवल्स मैंने मोल्स में भी बना रखे हैं। तो मोल्स का फर्स्ट स्टेज आप कर चुके हो, जिसके अंदर आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे। फिर आप मोल्स का दूसरा स्टेज पर आए, जहां पर आपने 2 फॉर्मूलाए एक साथ ज्वाइन यूज किए, ठीक है ना। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेज ऑफ मोल, which is the relation with equations, right बच्चों? So it is made by me, so definitely it is not the fact of the past papers, or it is not the fact of in your syllabus or in your books. So आप ये मत समझिएगा कि मोल्स के 3 लेवल हैं। भाई, मोल्स के 3 लेवल नहीं, वो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए, आसानी के लिए, right? So for example, if a question is over here, sodium is added to the water, right, and it forms what? Sodium hydroxide and hydrogen gas, right? And for the balancing, we know that for 2 over here, 2 over here, 2 over here, it is a balanced equation, right? And sodium is metal, so it is solid, water is liquid, and it is soluble in water, so aqueous, and it is gaseous. So this is actually the equation over here. And the examiner says that 23 23 के अलावा कुछ यूज करते हैं, 50 grams sodium is added to excess water. Calculate the volume in centimeter cube of hydrogen gas produced. Right. This is a question from an examiner, and they are asking what the volume of hydrogen gas, or diya kya, the mass of sodium. Just look at over here. What nonsense is this? They just gave us the mass of one reactant, and they are asking the volume of the product, one of the product. So what is this? What's going on over here? Definitely, we were talking about in the previous classes, in the previous exercises, that they gave us the mass of someone, and we can take out the moles of that. That's simple. And in the next, in the previous exercises, we learned that if someone gave me the mass of the substance, I can find out the moles of that, and then I can find out the volume of that. That's okay. We were talking about only one substance, but right now, what is going to be happen over here with you? They gave us the mass of one and then asking the volume of the other. So this is known as stoichiometry. This is actually known as stoichiometry. This is the relation. This is what? The relation of the particles between each other, right? So they gave us the mass of sodium and they are asking for volume of hydrogen gas. Now, what we need to do, I suggest you to use 3-step formation of this. I always suggest every of my students to solve in this way. The first is always find out the moles. The second is always find out the relation. And the third one is the variable that you want to find out. Right now, the variable is volume, so you need to find out volume over here. They can be asked for mass, they can be asked for number of particles, they can be asked for energy, they can be asked for concentration, and many things. So this is the variable, it can be changed, right? So first of all, what you need to do, you need to find out the moles, right? कुछ हो ना हो, moles निकाल लो. तो moles कैसे निकालोगे बच्चों? The mass is given 50. So you can divide 50 by the MR of sodium. You can find out the number of moles.
what is the number of moles over here? The number of moles over here, बच्चों, 50 divided by 23. So it is 2.174 moles. We got the moles, right? क्या आ गया हमारे पास? We got the number of moles. हमारे पास क्या आ गया बच्चों? Number of moles आ गए. Now, what we need to do? We need to find out relation. हमें relation लगाना है. How can we find out relation? देखो relation बड़ा simple है. ये सीखना है आपने. Relation हमेशा कैसे लगता है? Relation बच्चों लगता है हमेशा given में और required में. Just look at over here. What is given to you? The given is the mass of sodium. That means the sodium is given to you. And they're asking for hydrogen gas volume. So the hydrogen is required, right? One is given and one is required, right? First of all, you need to see the relation of these through equation. Equation में आप देख सकते हैं, it is given to you 2:1. The relation is 2:1. And what is given to you in the condition? The number of moles of sodium is 2.174. So you need to find out the number of moles of gas, right? Equation में बताया गया कि अगर 2 मोल सोडियम के रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बनेगा, right? But you have the number of moles which is 2.174. Now you are going to find out यार बनेंगे कितने. हम क्या करेंगे? X को यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे. So it will be like 2.174 and then divide by 2. So it will give us what? It will give us the X key value, which is 2.174 divided by 2 will give you 1.087. So what is X? X is actually moles of hydrogen gas, जो कि आपने निकाल लिया, right? And what is that third thing? Third thing is the variable that you are finding for the volume in centimeter cubes, right? So you have number of moles, right? You can find out the volume is centimeter cube is moles into 24,000. We have moles, which is 1.087. We can simply multiply it with 24,000. We will get what? We will get the required volume, which is 26088 centimeter cube. Is that right, bitch, or not? Yes, sir. So this is the way to solve such questions. Remember the way, what I am saying. For example, why I'm telling to do this. Some of us can make mistake, right? We can mistake now. We can do mistakes because we are human beings. Human beings can do mistakes, right? So you can do mistakes if you go to the topic wise, for example, or step wise. So you will see that, for example, अगर आपने ये सही कर लिया, so you will get number 1. 1 marks आपको यहाँ मिल जाएगा. By mistake, you do a mistake over here. तो इसका नंबर आपको कट जाएगा, बट ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा ड्यू टू द एरर कैरी फॉरवर्ड. तो आपको 2 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. और अगर आपने ये भी सही कर दिया, सो यू विल गेट व्हाट 3 मार्क्स आउट ऑफ 3 मार्क्स. सो यू नीड टू सॉल्व इन द स्टेप वाइज, सो इट विल बी लेस चांसेस और लेसर चांसेस टू डू अ मिस्टेक ओवर देयर, राइट बच्चों? यस सर. चलें, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे. आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे and the end of the class will be seen then after the reaction or after the question, right? So for example, bachcho, we have magnesium nitrate, right? We are decomposing this and we are having magnesium oxide to form nitrogen dioxide and half oxygen gas, right? This is actually solid, decomposes into solid, into gaseous state and into gaseous state. For example, examiners told you that you have 100 gram magnesium nitrate decomposes to produce different products, right? Find out, calculate the volume in decimeter cube. Calculate the volume of nitrogen dioxide in decimeter cube produced. चलें, जल्दी से मुझे करके दिखाएं और उसके बाद आपकी छुट्टी. जल्दी से.